Good evening and welcome to another amazing session of TravClan webinars. This is your host Harnoor Singh for the evening. In today's webinar, we are going to discuss the favorite international destination of Indian tourists. Yes, you are right. We are going to talk about Dubai. Dubai has focused a lot on tourism in the recent time, and we can see a lot of new tourist attractions coming up over there. In this session, we'll see how TravClan provides you the best services at the best prices, so you can say we are value for money when it comes to Dubai. And we'll know all the latest updates and offers with regards to this destination. So stay tuned with us as we proceed further in this session. And if you have any queries, you can post them in the live chat and we'll take them up in our Q&A session. Now, without any further delays, I would like to welcome the speaker for the day, Mr. Rizvi, Supply Manager at TravPlan. Hello, Rizvi. How are you? I'm good, Harnoor. How are you? Hello, everyone. Yes, I am also doing good, and our agents are also excited for this session. I can see a lot of people joining in today because, whether it's COVID or the situation is settled, the query flow for Dubai is always very high. People, True. whether it's a honeymoon trip or a family trip or even a solo trip, people love going to Dubai. So, Correct. yes, I just want to know everything about it. Okay. So, people usually, think about travel, and when it comes to traveling, Dubai has been an amazing destination for, Indian travelers. Uh, सबकी bucket list में कभी ना कभी दुबई हमेशा ऐड होता है. तो if we talk about, दुबई, तो हमने लास्ट वेबिनार में भी शायद डिस्कस किया था. दुबई इज ऑल अबाउट ग्रैंड थिंग्स. Dubai is all about show off and grand things. In today's webinar, we'll be discussing about few different things, uh, few challenges, let's say, or I will just try to explain how people confuse कि कोई सर्विसेज ऐसी है एंड हम किस तरह से प्राइसेस बेटर कर सकते हैं एंड हम प्राइसिंग और सर्विसेज के बीच में जब हमें डिफरेंस बनाना होता है तो हम वो समझ नहीं पाते हैं. सो फोकस थोड़ा सा उधर ही रहेगा जहाँ पे आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि हम सर्विसेज बेटर करके एंड बेटर प्राइस में किस तरह से अपने कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं, किस तरह से उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. So if we talk about Dubai as destination, I'll in next 2 minutes I'll start a PPT where I'll be showing you few components, how एक सिंगल कंपोनेंट्स में काफी सारे वेरिएशंस होते हैं. करेक्ट. तो हम पहले कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे एंड देन आई क्विकली टेल यू कि हम ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से क्यों कर रहे होते हैं. बिकॉज जब भी हम किसी ट्रैवलर को अपने बाहर भेज रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस ये होता है कि ऑब्वियसली एक एजेंट अर्न करना चाहता है, बट अर्न करने के साथ साथ उनके ट्रैवलर को एक अच्छी सर्विस भी मिलनी चाहिए. करेक्ट. सो द फोकस शुड बी देयर ओनली. तो आई शेयर माई स्क्रीन. So अभी if I'll just explain PPT का जो heading है, why book Dubai with TravClan. So there are a lot of other vendors, a lot of other people out there, and I'm not saying कि they are I mean we are the best, but we are good, right? And when it comes to service, we are providing a lot of variations, and we are quite focused on our service. तो उन चीजों को लेकर के हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके. So if we talk about just the pricing, so there are services जिन पे बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं एंड वेरिएशंस की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें बहुत वेरिएशंस आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट दुबई, तो लोगों का परसेप्शन होता है कि दुबई में सिर्फ एक ट्रायो है, देन बुर्ज खलीफा है, अबू धाबी सिटी टूर है. हर कोई सिर्फ यही मेजर कंपोनेंट्स को सेल करने में लगा है. करेक्ट. वी यूजुअली डोंट सजेस्ट आर travelers के these are the new things, these are the new sightseeing, these are uh, good for experience. हम ज्यादा चीजें सजेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज मार्केट में जो चीजें बिक रही है हम वही बेचना चाहते हैं. करेक्ट. हमारा फोकस उस चीज पर नहीं है.
We want, if any of you is buying Dubai from TravClan, we want you to experience Dubai in such a way कि आपका कस्टमर हमेशा वो ट्रिप याद रखे. So we are offering a lot of, I mean, when I'll explain, you will get to know वो छोटे छोटे variations. So we are actually value for money, that you will understand with the, जैसे हम PPT आगे आगे चलेंगे. So there is no reason to book TravClan if you just look at the price. And but अगर हम price की बात करें तो pricing में भी we are competitive. I'll say a lot of people ask कि you are providing services, you are providing prices, आपके price equal है market में, and how you guys are better from the others. तो उसी चीज को आज हम explain कर रहे हैं. So pricing को लेकर के if you are saying, तो yes there are people and there are, as I said, कि because एक component के बहुत सारे variations होते हैं, तो एक component इतने variations में आता है कि उसके price बहुत कम हो जाते हैं कई जगह पे, and उसमें service का जो standard है वो कम होता चला जाता है. तो हम लोग एक सर्विस का स्टैंडर्ड मेंटेन करके एक बेटर competitive प्राइसिंग पे प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, एंड वी हैव सक्सेसफुली बिल्ड दैट सो फार. So I'll just quickly give a brief, about desert safari. So if we talk about desert safari, there are a lot of different categories. कोई आपको स्टैंडर्ड कैंप देगा, कोई आपको डीलक्स कैंप देगा, कोई लग्जरी कैंप देगा, कोई हेरिटेज कैंप देगा, कोई आपको 4x4 पिकअप देगा, कोई आपको स्टैंडर्ड शटल से पिकअप देगा एंड एक जगह ले जा करके वहां से दिल आस्क के यहाँ से अब आपको लैंड क्रूजर में जाना है. कोई आपको इनिशियल डेजर्ट शुरू होते ही आपका ड्यून बैचिंग करा देगा, या फिर कोई आपको बिल्कुल डीप डेजर्ट में ले जा करके जहाँ पे एक्चुअली हाई ड्यून्स है वहां पे आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे. सो ये एक्सपीरियंस कभी कभी हम लोगों को पता नहीं होते हैं, बिकॉज एज ट्रैवल एजेंट्स आई एम नॉट श्योर कि हम लोग हमेशा ट्रैवल कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज हमारा ज्यादा फोकस सेल करने पे होता है. तो वो एक डिफरेंस आ जाता है. सो जब डिफरेंस की बात करते हैं तो पिकअप के लिए भी, एज आई सेड, कि 4x4 भी होता है, बस से भी पिकअप होता है, एंड उसके अलावा लोग कोई पॉइंट टू पॉइंट भी आपको पिकअप दे रहे होते हैं जब एसआईसी की बात आती है. सो आई जस्ट क्विकली शो यू एन एग्जांपल. सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, जस्ट अ बेसिक कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय कलीग. तो उन्होंने बताया कि किस तरह से पिकअप्स भी डन होते हैं. कई बार 4x4 कार से पिकअप हो रहा होता है, कई बार बस से होता है, कुछ फिक्स पॉइंट से भी पिकअप करते हैं डेजर्ट सफारी के लिए, जो कहते हैं कि हम आपको मेट्रो स्टेशन से पिक कर लेंगे या फिर हम आपको किसी आसपास लोकेशन से पिक कर लेंगे. सो दीज आर दी वेरिएशंस, करेक्ट. एंड if we talk about the camps, so there are different type of camps as well, correct. When it comes to price beat, price match karna, so again there are a lot of things to keep in mind when we are talking about price beat or price match, कि हम जब प्राइस मैच करने की बात कर रहे हैं या प्राइस बीट करने की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली कौन सा कैंप ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट. अगर हम उसमें जो कैंप ऑफर कर रहे हैं वो सेम कैंप है जो हम कंपेयर कर रहे हैं, देन आई एम 110% श्योर वी आर going to be the best partner for you, and I am 110% sure about that. So this is a basic example कि हम किस तरीके से डेजर्ट सफारी ऑपरेट कर रहे होते हैं. सो लेट्स सी इफ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट सफारी का जिस तरह से पूरा जर्नी होता है शुरू. तो सिटी से बाहर एक एरिया आता है अलवीर. अलवीर में बहुत सारे कैंप्स होते हैं, सारे कैंप्स अलवीर में होते हैं, एंड उसके बाद कुछ लोग इतने ही एरिया में आपका अलवीर के आसपास ही डेजर्ट सफारी कंप्लीट करा देते हैं, ड्यून मैचिंग करा देते हैं. बट देर इज एन एरिया कॉल्ड लहबाब, एंड लहबाब से भी आगे आता है मरघम. सो हमारी डेजर्ट सफारी अगर हम बात करें तो हम लहबाब और मरघम के एरिया में करते हैं. दिस इज द हाई ड्यून एरिया, राइट. नाउ इफ यूल सी कि अगर आपका कस्टमर यहाँ से यहाँ पर आया, करेक्ट, एंड उसने सिर्फ रोड वाले एरिया पे जहाँ पे एक्चुअली हैवी डिजर्ट नहीं है या हाई ड्यून्स नहीं है, वहां पे उसने डेजर्ट सफारी की, या फिर उसने वहां डेजर्ट सफारी की जहाँ पे हाई ड्यून्स है. सो एक एक्सपीरियंस का डिफरेंस आपको बातों में ही लग जाता है, करेक्ट. सो वो एक्सपीरियंस
खुद से देखना एंड वो एक्सपीरियंस करना, प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाता है, करेक्ट। अब इसमें कुछ लोग आपको अगेन एज आई सेड कि बस से पिकअप दे रहे होंगे, शटल से पिकअप दे रहे होंगे कुछ रास्ते के लिए, करेक्ट। एंड देन वो फिर आपको कैंप ले जाएंगे। सो दिस इज द वेरिएशन। बट एज आई सेड कि हम जब डेजर्ट सफारी दे रहे होते हैं तो हम होटल से पिक करते हैं डायरेक्टली, हम आपको अलावीर लेकर के जाते हैं, राइट। अलावीर के बाद आप सीधा लहबाब जाते हैं, लहबाब में आपकी डेजर्ट सफारी कंप्लीट होती है हाई ड्यून्स में, 30-40 मिनट्स की आपकी ड्यून बैशिंग होती है। देन आप वापस कैंप आते हैं, वहाँ पे डिनर करते हैं अपना, राइट। एंड देन आपको वापस से उसी 4x4 में आपको कैंप घर आपके होटल पे छोड़ दिया जाता है, करेक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 4x4, तो इसमें भी वेरिएशंस है। यूजुअली वी पिकअप योर गेस्ट यूजिंग लैंड क्रूजर, समटाइम्स द इक्वल category cars as well. So that is the difference, जो सर्विसेज में आता है। इसके अलावा लेट्स से आई गिव यू अनदर एग्जांपल। सो व्हाट हैपेंस, कई बार जब हम अबू धाबी सिटी टूर और फरारी वर्ल्ड की बात करते हैं तो लोग यूजुअली जाते हैं फरारी वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने, फरारी वर्ल्ड में ज्यादा राइड्स एंजॉय करने के लिए। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि गेस्ट या तो सुबह सुबह फरारी वर्ल्ड चला जाए एंड शाम को ग्रैंड मॉस्क एंड सिटी टूर कर ले, राइट। और पहला तरीका ये हो सकता है कि पहले वो फरारी वर्ल्ड चले जाएं एंड वो शाम को ग्रैंड मॉस्क, सॉरी, सुबह सुबह सिटी टूर कर लिया एंड शाम को फरारी वर्ल्ड, पहला वेरिएशन, एंड सुबह फरारी वर्ल्ड एंड शाम को सिटी टूर, दूसरा वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम गेस्ट के एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं तो सुबह सुबह अगर आप डेजर्ट में निकले तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, करेक्ट। अब उस टाइम पे अगर आप किसी को मॉस्क में या बाहर सिटी टूर के लिए अगर लेके जा रहे हैं तो गेस्ट थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है या गेस्ट को मजा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कि काफी ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। एंड वहीं पे अगर आप उनको सुबह सुबह अगर फरारी वर्ल्ड दे देते हैं तो गेस्ट का एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो जाता है कि जैसे ही सुबह सुबह फरारी वर्ल्ड ओपन होता है आपके गेस्ट फरारी वर्ल्ड पहुंचते हैं एंड फरारी वर्ल्ड वो पूरा अच्छे से एंजॉय करके शाम को फिर उनको सिटी टूर करा के वापस होटल ले आया जाता है। सो दीज आर दी वेरिएशंस एंड वो वेरिएशंस में ही प्राइसिंग का डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस बेटर करने की, सो दीज आर द थिंग्स विच वी कीप इन माइंड कि जब हम कस्टमर को सर्विस कर रहे हैं तो उनको ये छोटी छोटी चीजों के एक्सपीरियंस हम बेटर कर सकें, करेक्ट। सो दिस इज वाई पीपीटी का जो हेडिंग था, वाई बुक दुबई विद ट्रैवक्लैन, these are the basic reason we care for the customer, correct. We care for your customer and उनका ध्यान रखना is our responsibility when it comes to travel। जब वो travel कर रहे हैं we are the host, right. So these are the basic things which we keep in mind when servicing your query. So this is the reason we are actually value for money. We are not the cheapest but we are value for money. Now this is again this can be a major difference as well. So there are, as I said, there are a lot of camps in Dubai. So हर कैंप में अलग अलग तरीका मील्स भी होते हैं, करेक्ट। अब लोग सस्ते कैंप्स के चक्कर में क्या करते हैं, मतलब सस्ती केटरिंग से खाना ऐड कर लेते हैं, करेक्ट। एंड कुछ कैंप्स होंगे जिनमें खाना भी बेटर केटरिंग से आ रहा होगा। सो दिस इज वेयर जहाँ पे डिस्काउंटिंग का ऑप्शन मिल जाता है लोगों को। तो जब आप सस्ता खाना ऑर्डर कर पाते हैं एंड जब आप पेट्रोल एंड ट्रांसफर्स में पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर्स में पैसा बचा पाते हैं तो आपका कंपोनेंट इजीली सस्ता हो जाता है। बट वो कस्टमर के एक्सपीरियंस में फायदा नहीं करता, राइट। कस्टमर खाना खाने के बाद खुश नहीं होगा, कस्टमर बोलेगा यार इसमें मजा नहीं आया, करेक्ट। तो ये डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट में। whereas I said के as I said earlier कि हम शुरू से जब हम पिकअप की बात कर रहे हैं, कैंप ले जाने की बात कर रहे हैं या ड्यून बैशिंग की बात कर रहे हैं एंड अगेन अब हम जब खाने की बात कर रहे हैं तो इन सारे एरियाज में वी कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, राइट। एंड देयर आर लॉट ऑफ इंक्लूजन्स एज वेल, राइट। हमें कैमल राइड आ जाती हैं यहाँ पे। अब ये कुछ कैंप्स ऑफर करते हैं, कुछ कैंप्स ऑफर नहीं करते हैं। तो हमेशा इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब हम इंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं एंड जब हम कंपेयर कर रहे हैं
तो हम अंडरस्टैंड करें कि कौन से कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं, हम इंक्लूजन एक्चुअली हमें मिल क्या रहे हैं. So that is equally important to understand. So so usually what happens कि आपके कस्टमर भी आपके कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह पे कंपेयर करते हैं. एंड इफ यू आर वर्किंग विथ TravClan, तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू आस्क योर कस्टमर एज वेल कि जब वो आपको कहते हैं कि आपका प्राइस एक्सपेंसिव है, सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या मिल रहा है एंड व्हाट यू गाइज आर ऑफरिंग, राइट, व्हाइल वर्किंग विथ TravClan. सो देयर कम्स द नॉलेज कि हमें प्रोडक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट. एंड वो प्रोडक्ट समझना इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो अभी तक जो मैंने कॉन्वर्सेशन किया, इट वाज बिटवीन अ प्रोडक्ट विच इज चीप एंड a product which we are offering which is value for money, right. It may not be the cheapest product available in the market, right, but it is uh, a very good product available for you which you can absolutely offer your customer, and I am 110% sure your customer will like it. So I'll just quickly explain why we are good and value for money. So as I said, okay, we are actually quite focused on customer experience when travelers are traveling. So there are a lot of things which we keep in mind while serving them. One of them is right, okay, we are creating groups. Some sometimes what happens कि हो सकता है कि ग्रुप में कस्टमर कुछ मांग रहे हैं, राइट, एंड आप कोई कोऑर्डिनेशन का एरर आ रहा है. तो वहां पे ग्रुप में क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई भी सर्विस का कोई इशू आ रहा है तो वो रियल टाइम में हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए. आई बिलीव के एंड आई नो के मेजोरिटी ऑपरेटर्स आर डूइंग दिस थिंग. वी ऑल्सो आर डूइंग द सेम थिंग, बट द change here is again product servicing, right, and again, because we are also quite experienced in this destination, and we have good teammates who have good experience in Dubai. So we have successfully built a very good product which again you can offer to your customers. And I will really suggest you, if you are looking for price, please take our auto quote, and I'll share the link here. I'll quickly, actually, I should show you how the Insta quote works. So if any of your customer asks for, the price, you can just come here on our Dubai Insta quote page and get a quote, and you'll get a quote instantly in 15-20 seconds, correct. So you anyways have the link, and we'll share it with you post webinar as well. Right. So when it comes to credibility, we are actually partner with Dubai Tourism, and as I told you in the abhi just about AutoQuote. So our AutoQuote has 90%. I mean, it can cater 90% of queries because it has ट्रिपल स्टे एज वेल. तो अगर आपका कस्टमर चाहता है कि वो एक होटल में नहीं 2 होटल में रुके, या फिर वो चाहते हैं अगर 3 होटल में रुके, यू कैन एक्चुअली जनरेट एन ऑटो कोड यूजिंग आवर इंस्टा कोड, करेक्ट. एंड when it comes to fleets, right, तो sometime what happens के लोग आपको कहेंगे कि मुझे मेरा पिकअप इस कार में चाहिए या इस कार में चाहिए. So from a Privia to a Ferrari, right? We have everything in our product which we can offer when asked, right? And as we were talking about, the desert safari, so the camps which we are dealing in, they get customers from a lot of very good respected hotels, right? Like Rixos, Marriott, Radisson, right, which is actually a proof of good credibility, correct. And
right? As I said about the fleets, right? I mean, we can offer you a Previa, and we can offer you a Ferrari as well, right? So that's how we are actually very flexible when it comes to, product, and when it comes to pricing, we are quite competitive. And why competitive? Because we are not, the cheapest in the market, but we are quite focused on, the service part and the product. So yeah, if again you guys have any question about uh, Dubai as destination, how exactly we are catering, and what all other things we are planning to launch, you can ask. And also we are now offering fam trips to our members who have subscribed our platform. And yeah, we are hoping to meet you soon. Over to you, Harnoor. Yeah, thank you so much, Rizvi, for this wonderful presentation. And it was really amazing how simply you explained everything, like what is happening in Dubai and how we can provide the best experience to our customers. So yes, now we can begin with the Q&A session. We have been receiving a few questions, so we can start with that. So before we begin with the Q&A session, I would like to say that audience, if you have any queries left, you can still post them in the live chat and we'll answer them one by one. So starting with the first question, it is how fast the Dubai visa can be processed. And the second question is that are we doing visa as of now? Yes, we are doing visas as of now, but we are not doing standalone visas. So I'll quickly brief you about the technicality, because there are a lot of overseas placement uh, which happens through India. So sometimes it's very critical for a travel agent to identify who is traveling for leisure and who is traveling for overseas placement purpose. So that is where we keep a check, and we always try to identify the leisure trip. And if it's a leisure trip, yes, we are providing visas for them. Right. So And the it next, usually take sorry Harnoor, to interrupt. The first point was the duration. I mean, how much time it takes. So it usually takes 2 3 days, 2 3 working days. Sometimes it get delayed because I mean, it's about the immigration. Sometimes it gets delayed, but yeah, it usually takes 2 3 days max. right. So the next question is by Gallivanter Holiday World. So they are asking for desert safari. Can you arrange exclusive pickup by Land Cruiser directly from the hotel? Yes, we can. We are actually doing that only. So if we talk about the desert safari, as I explained, so the 4x4 pickup is being done with the Land Cruiser only. Okay. So the next is again feedback by Mr. Surat Singh. So he's saying hello to you, Mr. Rizvi, and he wants to Hello. get associated with TravClan as a B2B travel agent. Okay. So he's actually new and he's attending the webinar for the first time. And Sure, Mr. also, Suraj. since you mentioned about this membership and fam trip, so can you explain that for him? So, okay, I'll quickly explain about the membership and the FAM trip. So, those who are associated with us, or those who have been using our websites and the CRM, which is actually a combination, I mean, a product which we provide these travel agents to make their presence online. We are actually offering them a fam trip when they are completing 10 trips with us. There are few checks for that that you can find on the same page which I was showing you on our Instacode page. Right. And the next question is again with regards to this membership. So, what is the cost of this membership and how can Mr. Suraj get this? Okay, so the membership costs, I forgot the price actually. It costs around 8,500 including GST, right? The box price. 200 300 I guess ऊपर नीचे होगा, right? And for that you can contact me and I'll connect you with the right person, Mr. Suraj. Right. So, the price you mentioned, 8,500, is it for lifetime or for annual? Annually, Right. this So, including GST. so now coming to the next question by Indian Traveler, they are asking, do we also cater in overnight desert safari? And if yes,
Can you let us know the tentative cost for the same on per person basis? Okay, yes, we do, because we are dealing in few good properties in Babal Shams. Uh, if we talk about Babal Shams, it is a good property which offers overnight stay with the barbecue dinner in desert safari, and that costs around 600 USD per night. So it is, it is a very good experience. And there are other, options as well, which will be coming up with basic, the standard ones for the travel agents, because sometimes, no one asks, सब लोगों को इतना expensive product नहीं चाहिए होता है. Right. So moving to the next question by ARK Tourism. So they are asking where skydiving and zipline can be found in Dubai. What is the best? So if we talk about skydive, so skydive happens in two areas. One in desert, one is Palm. And if you ask for my opinion, I'll go for the Palm because उसमें ज़्यादा अच्छा view है. And if we talk about zip lining, so the best location for zip lining is Ras Al Khaimah. It is around 3 kilometers long, and it is one of the longest zip line in the world. And yeah, so Ras Al Khaimah is the place to go for zip lining. Right. So we have another question in continuation to this. So are we offering these add-ons and inclusions in the packages we are offering in the instant code page? I didn't understand the question, Harnoor, actually. Right. So I'll repeat. So what they are asking is that on our instant code Dubai page, so Mm-hmm. are these inclusions over there? Are they there in the packages and itineraries we offer? Yes. So if you will, check the instant code page, there is a section which is called additional sightseeing. There are 250 plus sightseeing mentioned, and we are also upgrading our system. So soon you'll be, finding these Ras Al Khaimah and these zip line in that section as well. Right. So now moving to the next question. So they are asking, since now the Dubai is closed on Saturdays and Sunday, Friday, Mm-hmm. is there any issue or not? So yeah, because दुबई ने अपना हॉलीडे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया है. So now they are working half day on Friday, and Dubai remains closed on Saturday and Sunday. So इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, एंड इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वीजा साइड पे भी, बिकॉज समवन आस्क्ड के वीजा में कितना टाइम लगता है. सो इफ वी आर वर्किंग ऑफलाइन, एंड वीजा हमने ऑफलाइन प्रोसेस कर दिया है, तो सैटरडे संडे ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो जाता है, बट या एज सच इससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता है. Right. So the next question is by Mr. Jitesh Shavla. So he's asking, since these days many flights are either landing at Russell Khema or Sharjah Airport, and that too in midnight hours. So any option for pickup and drop from these two in late night on private basis? Yes, yes. We have transfers available for both the locations. Okay, so the next question is from IT Nature Club. So they are asking, we also like to know if you can offer Dubai with Saudi Arabia packages as the country is now opening for tourism. Correct, correct. So we are in talk with a few. We are in talk with Saudi Tourism Board as well, and we are doing few projects there. So soon you will be, getting packages of Saudi as well on our platform. Right. So with this, we have answered all the questions as of now. But again, audience, if you have any queries left, we'll wait for another minute. You can ask it, else we'll conclude today's session. So by the time, would you like to add anything, Rizvi? No, I'm just hoping that this webinar will at least, it will help others to understand के किस तरह से, as I was explaining, कि एक product में कितने variations होते हैं, and how, others are selling, and किस तरह से एक product. So I'm just hoping कि people will understand these variations, and it will help them actually to close more queries.
Okay, so Mr. Jitesh Sabra has a follow-up question. So he is asking that he cannot see any such option on the instant code page. He asked that question about late night pickups from the. Okay. So it might not, available on the Instacode page. You can drop an offline query to us, and we'll probably share a code in an hour if you have. Right. So I believe with this we can conclude today's session. Thank you so much, Rizvi, for this amazing session, and the presentation was really nice. So thanks a lot. Thank you, Arnold. Thank you, everyone. Right. A special thanks to the audience for taking out time to attend today's session. I hope this session was enriching for you and you'll come and join again for the upcoming session. Also, audience, if you have any suggestions for the upcoming session, you can always write them in the live chat or reach out to your ACMs or directly reach out to me, and we'll surely bring those sessions to you. So thank you so much once again. And if you like today's session, do give it a thumbs up and don't forget to press the subscribe button and bell icon so that you do not miss on any future webinars happening here at TravClan official channel. Thank you.